good to see some faces. I mean, we do chat on Facebook, but good to have face-to-face session. Guys, this is my first try on live mentoring. I wanted to do it for a long time, but somehow मेरा अपना time, मेरी चीज़ें वो इजाज़त नहीं दे रही थी. लेकिन शुक्र है कि आज मौका मिल गया और जो हमने time agree किया, I'm here with you. अच्छा, let's be very clear. This is not an IT mentoring. It's a general mentoring for how we can do things, how we can live, so we can talk about living, we can talk about life, we can talk about IT, we can talk about business, we can talk about leadership, and we can talk about whatever comes to our mind. I am happy to share with you all my life and what I have seen, what mistakes I have made, how I have conducted myself, dealing with the customers, with the people, with my own people, my management style. I can share with you all in different sessions. I have got questions from you. Some of them we'll discuss now. Others I will pose them for others to also benefit. So if I don't take your question now, which you have sent us, don't worry at all. I will post on these questions my views on my Facebook, on my social media. So you will get your reply to how I see things, and maybe my views and my work will help you with your life and with your business and with your career, with how things to do. So with that, let me just pick up one question here, and it's a very important question, and this happens to everyone. The question is from Umair Manzoor: how to handle ups and downs in business? I think this is important. The question which comes to everybody, and एक बात हम याद रखें कि there will always be ups and downs. It's not possible कि हमारी ज़िंदगी एक constant line पे चले. There is no straight line in life. Life में भी नहीं है, कारोबार में भी नहीं है, हमारे personal relationship में नहीं है. So first of all, acceptance and acknowledging that there will be good and bad times help us deal with the bad times. और मेरा ये मानना है और मेरा बिलीव है कि हम लकी होते हैं जब अर्ली हमारी लाइफ में मुश्किलें आ जाएं. कारोबार में जब मैंने शुरू किया, कोई भी इंटरप्राइज मैंने इनिशिएट की, और अगर अर्ली डेज में मुझे चैलेंज आ गए तो दैट्स गुड फॉर मी, बिकॉज आई एम एबल टू अडॉप्ट टू दोज डिफिकल्ट टाइम्स. Sometimes I tell people even, and they don't like it, they have a very good time. They started something and it worked out very, very well. And they are doing it very well and they're very happy. And I say, yaar, tum bada lucky ho. And they just look at me, why SG is saying that? We are lucky, we are doing well. I said, yaar, inshallah, meri dua hai ki you continue to do well. But because you're doing well from day one, जब भी तुम्हारी कुछ issues आएंगे, challenges आएंगे, जो आएंगे, then it will be very difficult for you to adopt those challenges because you're not used to it. So it's not bad अगर आपको challenges जल्दी आ जाएं आपकी ज़िंदगी में और आप उन challenges को manage कर लें. How to deal with them? Acceptance, acceptability. दो चीज़ें acceptance है. एक तो ये market change हो जाती है, customer change हो जाते हैं, environment change हो जाती है, the way of doing business change हो जाता है. उसकी वजह से business में dips आती हैं. I have seen those dips in my business for 28 years. मैं NETSOL को run कर रहा हूँ. I have seen those dips, and some of this was surprising. They were unforeseen. हमें imagine नहीं कर सके. मैं example देता हूँ आपको. 2008 और 9 में suddenly financial crisis आया था. पूरा meltdown हो गया financial market, and we sell financial product. We could not imagine. We were not ready for that. But we did survive. We survived because उससे पहले हम मुश्किलें देख चुके थे. We have seen more difficult time 10 years before that and years before that. So we were able to regroup very quickly. We were in shock, in fact, for a period. We were in shock, ये क्या हो गया? But we were able to regroup quickly and we were able to calm down our nerves and then got back. So आपकी nerves को आपने calm down करना है, accept करना है कि ये downs natural है. फिर reasons आपने ढूंढने हैं. You have to find the reasons. और reasons में अपना जो conduct है, अपना जो decision, उनको challenge करना है आपने कि maybe it's because of my conduct, maybe it's because of my decisions. I have seen these downs. You do that, you're able to regroup, you're able to change your ways. Unfortunately, some of us do not appreciate that. Some of us blame the environment and the market and the people around for the downs. Those people
unfortunately will never be able to come back and recover. So अपने में लेके आइए, make sure you have the ability to acknowledge your own decision making in the cause of your downs, some of the conduct you have been, the way you're behaving, because of those, you have this problem. So this was important question, and I answered that. Okay, leadership. I think this is a question from Salman Shahbaz. Leadership is the key to any building of an enterprise. And how does a leader behave? How do we define a leader in terms of... So for me, leader is the person who is most giving person. Leader is not a taker. Leader is a giver. Leader has to give. Leader has to give in a lot of things. Leader has to give in the ego. सबसे बड़ी आपको अपनी ego मारनी है. As a leader, if you can kill your ego, you will be successful. But if you have a big ego of a CEO, you have a big ego of a big man, I'm afraid you're not a good leader. So to me, the most successful leader is the one who has no ego at all, who is humble, who is down to earth, who has the ability to bow his head down when he's doing well. That is the key to leadership in a long way. You can have a company, you can make a lot of money, you can build a company in a few years, doing well, but to have a long-term success, for that leadership depends upon the person's behavior. सबसे critical आपको बताऊं मैं, मेरे नज़दीक मेरे कस्टमर से ज़्यादा मेरे लोग important हैं. I give more importance to my people than to my customer. Customer फिर मुझे मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग नहीं मिलते. तो जब अच्छे लोग मिल जाते हैं तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. One thing important what I do listen to my people. जब भी मेरी किचन कैबिनेट मेरे सामने बैठती है, मेरे साथ बैठते हैं, एंड दे मेक श्योर दे डिसएग्री विद मी. ये बड़ा मैंने कल्चर बना दिया है. I want my people to disagree with me. Whatever I say is not the ultimate word. I'm not the smartest. I'm not the wisest. अगर मैं इतना स्मार्ट वाइज होता तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा. कोई मेरे पास ना आए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़हीन हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ. तो ये जो मैं सब कुछ जानता हूँ, ये है सबसे बड़ा इश्यू. सो आप सब कुछ नहीं जानते. सो डोंट प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग. लेट पीपल स्पीक इन फ्रंट यू, टेक द एडवाइस, लिसन टू देम. यू कैन डिसएग्री, let people disagree with you. Don't bring up your boss डंडा कि यार मैं बॉस हूँ, मैं सही कह रहा हूँ. डोंट डू दैट, एंड दैट्स वेयर यू बिकम अ वेरी गुड लीडर. सो लीडरशिप में क्विकली मैं इसे क्लोज कर दूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल पड़े हैं. लीडरशिप इज हम्बल, डाउन टू अर्थ. लीडरशिप इज द पर्सन हु इज एबल टू bring in a very good team, smart people, smarter than herself or himself. That is a good leader, जो अपने से ज़्यादा smart लोग इकट्ठे करता है, and then listens to them, then takes the advice, and if somehow things go wrong, then takes the blame. Don't blame your people, because you are the boss, you are responsible. So अगर आप में ये चीज़ आ गई है कि आप blame लेने को तैयार हैं, और especially when things go wrong, you are the one who accept the wrong and the blame, and don't blame your team, बल्कि buck up your team, then I show you ultimately things will go well. Things will turn around and will go, because you are able to blame yourself, not the team. So कभी अपनी टीम को blame मत कीजिएगा. Obviously weaklings को आपने फारिग करना, वो normal है. We can see the lazy people, we can see the weaklings, वो तो आपको करना है. But when the good people are there and they made a mistake, so be it. I have made so many mistakes. और अगर मैं गलतियाँ ना करता तो मैं आज आपके सामने ना बैठा होता. तो आपके लोग भी गलती करेंगे, वो जनरल गलती है, आपको पता है कि उन्होंने ट्राई किया, इट डिडंट वर्क आउट, एक्सेप्ट इट. द पाथ टू अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बाय उबैद रियाज. देखिए, ये पाथ बड़ा सिंपल है. आप बिजनेसमैन का जो वर्ड है ना, ये बड़ा सारा डुबियस सा है, क्योंकि बिजनेसमैन इज ऑल अबाउट मनी. सो सवाल ये है कि क्या आपका बिजनेस वेंचर सिर्फ मनी मेकिंग के लिए है, या आपका आइडिया कुछ बड़ी पिक्चर का है? तो ये सवाल का जवाब आपने खुद देना है. मैं आपको बता दूं, मेरा आइडिया बिल्ड करने का था, कि मुझे बिल्ड करना है समथिंग विच विल लास्ट. सलीम गौरी और एसजी को भी लास्ट कर जाएगा इंशाल्लाह ताला. जब मैं रिटायर होऊंगा और जब मैं नहीं होऊंगा, तो भी ये कंपनी जो नेटसोल है बड़ी होगी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसको ऐसा बिल्ड किया जा रहा है कि इट इज बिल्ड टू लास्ट. That is my own view of building a business. So I was never focused on all about money. Yeah, of course money is important. Of course money has to be made to be profitable. Of course money has to be made to pay to the employees. But that is not the core of
बिजनेस जो आपका मेन कंसेप्ट है. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. You can be a businessman just about money. Yeah, by all means make money. But क्या वो लॉन्ग टर्म आपका एंटरप्राइज बिल्ड हो जाएगी? आई डाउट, क्योंकि फिर आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होता है. फिर आप बेसिक चीज़ें कंपनी में बिल्डिंग करते हैं. यू डोंट बिल्ड टीम्स, यू डोंट बिल्ड प्रोसेसेस, यू डोंट बिल्ड स्टैंडर्ड्स, यू जस्ट टेक द मनी आउट. वो एक मनी मेकिंग मशीन आपका बिजनेस. फाइन, फॉर a few years it will make you money, but then gradually, because you're not investing back in the enterprise, it will gradually, like anything else, will change over. So, successful businessman, make sure you decide what you want to be. Build something to last, or you want to build something to money. That's okay. Making money, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई guilt नहीं है. Please, by all means, make money. But then it's okay to ignore the long-term success part. दोबारा बताइए. Yeah, we can take a question. I'm okay to do that now. So, can you open it? सलमान का नाम पूरा बताइए. सलमान, you want to have a question? You have a question? आपकी आवाज़ एक मिनट आइए. सलमान, एक I can't hear you. सलमान, wait, I can't hear you. Let my people. और यार हमारे भी टेक्निकल इशू हो जाते हैं सलमान, हम भी आईटी के लोग देखें ना. नहीं, आवाज़ यार एक मिनट आ जाइए. मैं देखो बेटा, एक मिनट आ जाइए. सॉरी गाइस, ये अभी अर्ली डेज है. इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएगी. नेक्स्ट सेशन बेहतर होगा. सो प्लीज जस्ट एक्सेप्ट दैट. कौन सा माइक यूज हो रहा है? सॉरी, स्पीकर कौन सा आ रहा है? स्पीकर कौन सा आ रहा है? इसका स्पीकर आ रहा है. तो स्पीकर फिर हमने इसका वो क्या होगा देख लें आप जरा. स्पीकर तो आ रहा है आपका. ये जूम पे है ना? ये हटा दे. इसकी वजह से तो नहीं है. जबरा निकाल दे. आई थिंक जबरा निकाल दे, क्योंकि इस पर चल जाएगा ना. पास ही तो बैठा हूं मैं. यार सलमान, यू टू से समथिंग. स्पीकर आ गया. सलमान, आप क्वेश्चन अगर बेशक चैट में लिख दें, उसको आंसर कर देते हैं. अरे आ गया. सो सलमान, I can hear you. I can hear you. We're good. We're good. Okay. Please go ahead. Okay. Yeah. Thank you, sir. Just a quick intro. My name is Salman. I'm based in Sydney, and I'm a senior manager with Accenture. First, I would like to quickly thank Salim sir and the NETSOL team for giving us the opportunity to be mentored by you. And so I was taking notes while you answered my question on leadership, that a leader has to let go of many things, and he does not have to be the smartest person, right? He has to build a team and then listen to the team so that he can take on the next steps. So my question is kind of related, which is, what is the greatest thing, Salim sir, you have learned in your life? Salman, humility. What I've learned is that I am nothing. यकीन करें, मैं द नेचर इज सो पावरफुल दैट जो मेरे फैसले हैं ना, वो मेरे नहीं हुए. यानी जिस चीज़ पे मैं बहुत श्योर था, वो चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन नेचर ने मेरे लिए ऐसे रास्ते खोले कि आई जस्ट फेल इन लव विद नेचर. यकीन कीजिए, आई थिंक समटाइम्स देयर इज मिरेकल इन लाइफ, क्योंकि आई लेफ्ट थिंग्स ऑन नेचर. आई डिड माई बेस्ट, आई वर्कड हार्ड, I wake up early in the morning. I go to gym every morning. Some of you know that I do that every day. So I don't leave things to, but nature shows you. So एक ले आइए अपने में, ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि we are not powerful at all, we are not the smartest, and nature जो है वो हमें गाइड करेगी. एक बात सब सुन लीजिएगा, जब कोई चीज़ ना हो ना आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ आप चाह रहे हैं करना और वो नहीं हो रही और आपको सैड हो रहे हैं, यकीन कीजिए वो कुदरत की तरफ से आपके लिए अच्छा है कि वो ना हो. मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं कुछ चाह रहा था, मैं कुछ ये नहीं, जब मैं जॉब कर रहा था, प्रमोशन वगैरह चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं ट्राई करता नहीं हुई. बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स नॉट हैपनिंग, टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सलमान. सो ये इसको एक्सेप्ट कर लीजिए सलमान कि नेचर इज द बेस्ट गाइड फॉर यू, एंड व्हेन थिंग्स डोंट वर्क आउट फॉर यू एट दैट मोमेंट, यकीनन इसमें कोई आपकी बेहतरी, और कल इंशाल्लाह यू विल बी ऑन अ न्यू पाथ, and that path will be better than the path you chosen today. So that's what I've learned. Okay, thank you, sir. So if I play it back, you're saying, give your best, and if things don't go your way, just keep moving on. Excellent answer. Well done. You have narrated very well. And trust me, I assure you, I have seen that. And when things, in fact,
जो चीज़ नहीं हुई उन्हीं से अच्छा हुआ. यानी the unfortunate things for me at that time, they were unfortunate. I was upset, I was crying, I was unhappy. But today, because of those unfortunate incidences, आज आपने मुझे अपना mentor मान लिया. So isn't that great? Thank you, Salman. Thank you very much. All right. Thank you, my friend. सर उबैद का क्वेश्चन. जी उबैद का क्वेश्चन क्या है बताइए. जी उबैद रियाज का क्वेश्चन है, कह रहे हैं my question was for building and establishing the company, it's not about money. Can you please elaborate how you build it at a very start, as it's very difficult for you to find a good team? Bad, yeah. So I'm glad that you have clarified yourself, to yourself, not to me, that to you it's not about money. Excellent. So now you have decided your path. Now what you have to do, Bad, from day one, you have to make sure you build the organization through processes. Very strongly. मैं आपको बताता हूँ वाकया Bad. कंपनी जब सिर्फ 3 साल की थी, अभी कंपनी नेटसोल बनी थी और पैसे भी नहीं होते थे मेरे पास. आई मेड श्योर आई सर्टिफाइड माई ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. अच्छा कोई और नहीं कर रहा था. सो दिस इज 1998 एंड आई कॉल्ड इन द पीपल फ्रॉम ये थी ऑर्गेनाइजेशन थी कि यार मुझे ISO 9001 सर्टिफाइड करा दीजिए बिकॉज आई वांट टू हैव सम डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड. सो दे केम इन, दे टुक सम मनी फ्रॉम मी. उन्होंने मुझे हेल्प की, मेरे मैनेजर्स को बैठ कर उन्होंने पूरा मुझे स्टैंडर्ड बना दिया. हाउ कैन यू बी ISO 9000 ऑर्गेनाइजेशन. That was the start of my documenting how to do things. Again, spending money. जो people will look at me, why are you wasting money? Well, you can just do it to yourself. I said, no. So again, in 2000, when things crashed, I don't know, some of you are very young, I can see very young faces here. When IT crashed completely, .com crash आया, पूरी market खत्म हो गई. We had zero money coming in. I went after CMMI levels. Borrowed money to pay those consultants to come in and make us a CMM level company. And for 6 years, I invested to become a CMM level 5 company, only company in Pakistan to reach that level with not having money. I still did. That changed the organization completely. We become a global organization. So yes, what you have to do from day one, everything has to be process-oriented. You have to start documenting. Hire, if you want to hire 10 people, सस्ते वाले, hire 5 अच्छे वाले लोग. Pay them well. Always pay your people well, reasonable. Of course, you have to look at your budget. I understand that. But when you pay people well, उनकी अगर फिक्र खत्म हो जाए कि उन्होंने घर चलाना है तो वो आपका काम टेक ओवर कर लेंगे. ये बड़ा क्रिटिकल है कि हम शॉर्ट चेंज करते हैं लोगों को, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो परफॉर्म 300 वाला करे, मैं उसको 200 रुपये रहा हूँ. तो आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट वैल्यू फ्रॉम पीपल, खुद असेस करें उस पर्सन की वैल्यू क्या है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पर्सन, आप डिसाइड करें और अच्छी वैल्यू लगाएं. और फिर कहें अच्छा यार मैं तुम्हें ये भी देता हूँ, तुम जाके काम करो, और मैं तुम्हें पावर भी देता हूँ. I'll give you the power to take decision and I'll support you. When I hired my first GM, because I was traveling a lot, I was not sitting in Lahore, so I told my GM कि यार मैं आपको पूरी पावर देता हूँ. And I'll trust you and I will let you spend the money, I'll let you take decisions. मैं जाके सेल्स करके आता हूँ, आप मुझे डिलीवर करें. So I trusted the person. I was lucky. The guy was excellent person. He took over and then चीज़ें अच्छी हुई, बुरी हुई, कमजोरी, doesn't matter. I fully support it. So Ubaid, this is what you have to follow. Hire people, pay them well. Don't hire 10 people, hire 7 people, 6 people, pay them better than what you're paying to 10 people, and then guide them, give them your wisdom, and give them your way of thinking, but let them work. Let them work, let them focus, and कर लेते हैं. So let me finish this question. So do that. और फिर slowly expect करें. Don't grow too fast. अगर आप देखें ना कि आईफल टावर कितने सालों में बना था, या अगर आप देखें आईफल टावर का बेस कितना बड़ा, वो क्यों नहीं गिरता हवा से, इसी के वो सीधा नहीं खड़ा हुआ. ह्यूज, बट बेस बनाने के टाइम लगेगा. सो बी रेडी टू टेक टाइम टू बिल्ड द बेस, बी रेडी टू स्टार्ट स्लो, बी रेडी टू गेट स्मॉल बिजनेस फर्स्ट. डोंट गो फॉर बिग चंक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज यू वोंट बी एबल टू बिल्ड कंपनी इफ यू गो फॉर बिग कॉन्ट्रैक्ट. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पहले 5 साल आई हैड ओनली कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $100,000 ईच, एंड आई वाज वेरी अपसेट. मेरे कोलीग के बाद $1 million के 10 million के कॉन्ट्रैक्टर में later on I realized कि मुझे बड़ा फायदा हुआ उस स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि I was able to focus on building what I was trying to do. So जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट आए तो I was able to deliver those contracts because I was able to build my company and processes. So Ubaid, I hope this will help, but I can answer more question Ubaid in terms of Facebook पे फिर पोस्ट भी कर दूंगा अगर आपके पास और क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या नाम है? सलीम जान, आप क्वेश्चन करें. कलीम जान, सॉरी कलीम जान. हाँ कलीम का मैं देख रहा हूँ नाम. कलीम, यू हैव अ क्वेश्चन? कलीम आ जाइए. Sir, the question is, first of all, thank you so much for taking out time for doing this. So the question is, how do you see crisis management?
especially for new startups, small businesses, especially in this difficult times, and also especially related to low sales and low cash flows. So like basically crisis management को आप कैसे देखते हैं, कैसे कभी कोई problem होती है तो आप कैसे handle करते हैं? कलीम That's the question. जी कलीम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। इशू ये है कलीम के एज ए यंग पर्सन व्हेन आई वाज यंग एंड जब मैं बिजनेस शुरू करता था मेरा एक ही काम था कि यार पैसे बहुत सारे कमाने हैं, आई वांट टू बी रिच वेरी क्विकली। तो मेरा आई स्टिल रिमेंबर इन माय 20s इन माय 30s कांस्टेंट मेरे सारे जो होते थे ना आइडियाज दे वर ऑल अबाउट मनी मेकिंग, दे ऑल अबाउट कि यार मैंने जल्दी से पैसा कमाना है, मैंने यू नो आई हैव टू डू समथिंग व्हिच विल ब्रिंग मी लॉट ऑफ मनी, यानी मल्टीपल प्रॉफिट्स लेके आए। दोज ऑल आइडियाज फेल, ऑल फेल। एंड जब मैं सेटल हो गया, जब मैं कामदार हो गया तो थिंग्स काम डाउन। पैसे मेरे पीछे आने लगा और मैं आगे भागता था पैसे, यार मुझे भी काम करना, अभी तुम मेरे पास आओ। पहले मैं पैसे के पीछे भागता था, पैसा मुझसे मेरे काबू नहीं आता था। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर शुरू में ही हम रेडी हों कि यार मेरा स्लो स्टार्ट होगा और मैं अपने बजट से ऐसे लेके चलूँ कि मैं एकदम एग्जिजरेट ना कर लूँ अपने आप को, एक्स्ट्रा विगेंट अपने ऑफिस ना बनाऊँ, मैं अपनी चीज़ें ना कर लूँ ताकि मैं मैनेज कर सकूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट मैनेजमेंट। कलीम प्लीज़ मैनेज योर कॉस्ट। एक्स्ट्रा खूबसूरत ऑफिस बनाने से बिजनेस नहीं बनेगा आपका, खूबसूरत लोग रखने से बिजनेस बनेगा। सो रिमेंबर, इन्वेस्ट इन पीपल, नॉट एक्सपेंसिव ऑफिस। मेरे पहले ऑफिस बड़े सिंपल थे, लकड़ी के वुड वर्क करता था, सिंपल वाला, यू नो आई वाज वेरी स्मार्ट इन मेकिंग देम लुक नाइस बट दे वर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो प्लीज टेक केयर ऑफ, डोंट पुट टू मच मनी ऑन योर ह्यूज बिग ऑफिस व्हेन यू स्टार्टिंग। इन्वेस्ट मनी ऑन ब्यूटीफुल पीपल, यानी जो खूबसूरत स्मार्ट लोग हैं उन पे पैसा इन्वेस्ट करें, उनको समय लाएं, उनको मौका दें। द इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑन द पीपल, नॉट ऑन द सेटअप्स एंड नॉट ऑन द लुकिंग ग्लैमरस ऑल दैट, उस पर ना करें। एंड देन बी रेडी कि यार काम मेरा स्लो आगे जाएगा, आपने खुद का सेल्स लोगी, मैं ऐसा ही बिल्ड करूंगा, मैं अपने घर के खर्चे कम रखूंगा। यार मैंने अपनी फैमिली को मूवीज नहीं दिखाई 10 साल तक, मेरे बच्चों के लिए चॉकलेट नहीं खरीदी क्योंकि आई कुडंट अफोर्ड दैट, मेरे बच्चों को ट्रैवल नहीं कराया, बच्चों को कुछ नहीं कराया मैंने, बट माई फैमिली was with me and they helped me. Today they are benefiting for the first 10 years when they cooperated with me of not going to, हम शादी अटेंड नहीं करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि we could afford to get the शादी वाले कपड़े. So you have to change your lifestyle. कुछ देंगे कुछ मिलेगा, ये भूल जाए कि कुछ दिए बगैर आप कामयाब हो जाएंगे. So please remember that, cut your cost, be very humble, be very careful. लोगों से मिलना छोड़ दीजिए ताकि आप अपने काम में फोकस करें. That way, my dear Kaleem, you will be able to survive the difficult time. जी सर एहसान पूछने कौन सी बुक है जिसकी वजह से आप यहाँ, दोबारा बताइए, कौन सी बुक है जिसकी वजह से आप यहाँ? एहसान बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन 2-3 क्रिटिकल बुक्स हैं. ये जो एक तो वो है, मैं जो बुक लकी था मैंने पढ़ ली, वो थी रिच डैड पुअर डैड. दैट बुक इज़ अबाउट फाइनेंसिस, हाउ यू मैनेज योर लाइफ विद द मनी. जो बातें मैं करता हूँ, मैं उस बुक से बहुत नरेट करता हूँ क्योंकि उसने मुझे हेल्प किया हाउ नॉट टू वेस्ट मनी इन थिंग्स विच डू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू वेस्ट मनी ऑन. सेकेंड है लीडरशिप पे, जैक वॉल्श की बुक है विनिंग है, वो पढ़े. हाउ ही टॉक्स अबाउट लीडरशिप, हाउ वो ही वाज बिल्डिंग द कंपनी. बिग ये बिल्ड टू लास्ट है, गुड टू ग्रेट है. ये बुक्स बहुत क्रिटिकल है. ये बिल्ड टू लास्ट है, ये इनकी जो एग्जांपल्स हैं IBM की और कोकोला की बड़ी क्रिटिकल है, हाउ दे हैव बिल्ट अप दिस कंपनी फॉर 100 years. सो मेरे लिए वो बहुत क्रिटिकल थी क्योंकि आई वाज एबल टू फोकस ऑन, एज आई सेड, कि मैं पैसा तो कमाऊंगा लेकिन पहले मैं बिल्ड करूंगा. दैट इज व्हाई यू कैन डू दैट. सर आयशा पूछनी, शुड वी हैंडल मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एट अ टाइम? आयशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिया आपने. देखिए आयशा, पहले अपने रिसोर्सेज को देख लें. मैं अभी बल्कि आयशा आपसे पहले मैं बात करता अपनी पूरी टीम से, मेरे को 1500 लोगों को मैंने जूम पे वैसी गपशप लगाई, मेंटोरिंग करता अपने लोगों को, अपने स्टाफ को, और वहाँ मैंने बताया सबको कि बहुत अर्से तक हम सिर्फ 1 प्रोडक्ट शॉप थे. फॉर 22 years friends, we just sold 1 product जिस पे हमने मेहनत की. Why? Because we didn't want to dilute it and not to have a good product. For 22 years, we focused on it. We made it best. We are the good at it. We are champion on this product. Now they've done it. Now we are going to multiple verticals and multiple products and new areas. After 20, well, this is the 28th year, but few years back we started. So now we are opening new verticals. But before that, we focused on one because we want to be the best. तो आशा ये क्रिटिकल है कि अगर आप मल्टीपल जाएंगे तो शायद आपकी डिल्यूशन हो और आप एक चीज़ अच्छी ना कर सकें. अगर एक चीज़ अच्छी कर लेंगे आप, तो आपका नाम बन जाएगा, आपका रेफरेंस बन जाएगा. फिर आप ऑब्वियसली व्हेन यू हैव डन वेल यू कैन ऐड मल्टीपल एरियाज. जी जी सर उमैर का सवाल है. आशा, अभी ओके? जी बिल्कुल. Yes, I have some related question as well.
नेटवर्किंग के ऊपर है कि वी हैव अ मल्टीपल कम्युनिटीज राइट इन द इंडस्ट्री, दे आर परफॉर्मिंग अ मल्टीपल एक्टिविटीज ऑन डेली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस. सो हम उसको किस तरीके से फिल्टर आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई कम्युनिटी से हमें इनवाइट कर रहा है कि एज आप ट्रेनर आके या आप उसको आके ऐसे ज्वाइन कर, बिकॉज कि अगर मैंने ये चीज़ें अभी एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करी हैं कि एट द एंड ऑफ मेरे पास उस चीज़ का कोई एक सर्टेन मेरे पास कोई ना वो नहीं होता कि अच्छा मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि अगर मैं अपने सारे काम छोड़ के गई हूँ 4-5 घंटे के लिए ट्रैवल करके, तो दैन मुझे उसका क्या फीडबैक मिला. ये बात बिल्कुल है कि मैं उनको गाइड करके आई हूँ, बट एज यू नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट, बहुत कम लोग हैं जो इंगेज होने के लिए आते हैं, बहुत ज़्यादा तो ऐसे ही रैंडम गैदरिंग के लिए आए होते हैं. तो हाउ वी कैन हैंडल दैट कि अच्छा. आशा, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि हम सब जो बैठे हुए लोग, इन सबको रिक्वेस्ट आती है कि यार थोड़ा मेंटरिंग कर दें, थोड़ा लेक्चर दें. लेकिन प्लीज़ अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर ओन इम्पॉर्टेंट, जो आप करें वो इम्पॉर्टेंट है. सो प्लीज़ स्टे फोकस्ड, अपने काम पर फोकस करें. ये करेंगी आप, मेरे एज में आके आपने ये सब कर लेना, अभी ना करें. हाँ, अगर आपको फील हो कि किसी को वैल्यू मिलेगी तो ये सदका जारिया है. लेकिन सदका जारी का फायदा, जैसे आपने कहा, लोग सिर्फ टाइम गुजारने आ जाते हैं, वेस्ट करते हैं टाइम. सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम. अभी आपका टाइम नहीं है. आप प्लीज़ वो करिए, उस पर फोकस करें, उस पर अच्छा हो जाइए, बी गुड एट इट. अब जैसे मैंने कहा, डिल्यूशन ना कीजिए, ये भी डिल्यूशन है आपकी. सो डोंट डिल्यूट योरसेल्फ. आई विल नॉट डू दैट. जी. So time कम है, बस last question. ऑलराइट गाइस, ये मैं इस सेशन को यहाँ रोक लेते हैं. मुझे मज़ा आया, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगा, बट मुझे बहुत मज़ा आया. सो इंशाल्लाह ताला दिस विल इंकरेज मी टू डू मोर सेशन. मेरे फेसबुक खुला हुआ है, वहाँ पर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उस पर आपको जवाब देता हूँ, पहले भी देता रहा हूँ. कुछ सवाल मेरे पास पड़े हुए हैं, ईमेल पे आए हुए हैं, मैं उनको एक एक करके फेसबुक पे डालूंगा, जवाब दूंगा, अपनी व्यू दूंगा. और प्लीज़ इसमें डिबेट कीजिए. यू डोंट हैव टू एग्री विद मी. अच्छा, अगर डिबेट होती है तो आई एंजॉय दैट, क्योंकि हो सकता है मैं आपसे कुछ सीखूं. सो प्लीज डिसएग्री विद मी ऑन माय व्यूज, ओपिनियन, एंड आई विल हैव अ गुड डिबेट विद यू. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग. अगर आप मुझसे कहें एच नहीं यार, आई डिसएग्री विद यू, सो आई विल नॉट बी अपसेट. सो बाय ऑल मीन्स मेरे फेसबुक पे आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, मुझे अपना ओपिनियन दे सकते हैं. आई विल लर्न फ्रॉम यू. फिर मैं आपका ओपिनियन आगे भी शेयर करूंगा कि आपने मुझसे ये कहा. ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे. स्टे ब्लेस्ड.